Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In previous lecture we have discussed about short-term control of arterial pressure. Today I will discuss with you long-term control of arterial pressure, which is done by kidneys. There are two mechanisms which are responsible for long-term control of arterial pressure. Number one mechanism is renal body fluid system, and the second mechanism is renin angiotensin system, which is a very important system in regulating arterial pressure. Firstly, we will discuss about renin angiotensin system. Whenever there is a decrease in arterial pressure, this system will get activated. Arterial pressure के कम होते साथ ही सबसे पहले this will influence kidneys, and kidney will release an enzyme which is known as renin. It is not a vasoactive substance. It is an enzyme. This renin persists in blood for 30 minutes to 1 hour. This renin will then cause the release of angiotensinogen. Angiotensinogen is another plasma protein. It is a globulin protein and it is also known as renin substrate. This angiotensinogen or renin substrate will then have an impact on lungs, and this will cause the release of another 10 amino acid peptide known as angiotensin 1. This angiotensin 1 is released from lungs. Now this angiotensin 1 has 10 amino acids. 2 amino acids from angiotensin 1 is split off and it will convert into angiotensin 2. Angiotensin 2 has very important role. It will firstly cause the vasoconstriction, specifically in arterioles of whole body, and whenever there is vasoconstriction there will be increase in peripheral resistance, और जब peripheral resistance increase होगी तो blood pressure exert करेगा to move forward, जिसकी वजह से जो arterial pressure है वो enhance हो जाएगा. Secondly, it will decrease the excretion of salt and water. It will cause retaining of salt and water in the body. It will cause renal retention. It will stop the kidney to excrete water and salt from the body. Whenever there is decreased excretion of salt and water in the body, there is increased extracellular volume. This increased extracellular volume will then cause increased in arterial pressure. अब extracellular volume enhance हो चुका है, blood में these substances are now added. Now blood will exert more pressure and then this will cause increase in arterial pressure. Increase in arterial pressure will cause that renin or angiotensin to get prohibited. अब renin और angiotensin की excretion कम हो जाएगी because that demand of increase in arterial pressure has fulfilled. अब फर्दर एनहांसमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से रेनिन और एंजियोटेंसिन की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी और आर्टीरियल प्रेशर अल्टीमेटली नॉर्मल की तरफ रिटर्न हो जाएगा. सो इन दिस वे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम विल रेगुलेट द आर्टीरियल प्रेशर whenever there is a fall in it. I will discuss with you what is the importance of renin angiotensin system. Experiment was being performed on dogs in which in one condition a dog was given angiotensin converting enzyme inhibitor drug which will inhibit the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2. In that case, the rise in arterial pressure was not much noticeable. Whereas in the second case, where there is renin angiotensin system is present, the rise in arterial pressure was very much noticeable. So, in presence of renin angiotensin system, arterial pressure will increase much more efficiently than in the absence of it. So now we are going to discuss about renal body fluid system. Renal body fluid system, it means the kidney regulate the blood pressure by controlling fluids like water and salts की concentration को balance करके kidney arterial pressure को balance करेगी. Mostly ये होता है कि salt body से easily excrete नहीं होता. इस वजह से वेन एवर देयर इज़ अ डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर, तो ऑलरेडी सॉल्ट बॉडी से इतनी ईजिली एक्सक्रीट नहीं होता. जब आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज की सिचुएशन होगी तो उस वक्त
कुछ एक्टिविटीज़ होगी जो कि आर्टीरियल प्रेशर को फर्दर नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगी। सॉल्ट ईजिली एक्सक्रीट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो इन्हांस होगा और आर्टीरियल प्रेशर इन्हांस हो जाएगा। अब सॉल्ट के एक्सक्रीट ना होने से वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसको ये इन्हांस करता है, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो ये है कि सॉल्ट, वेन एवर देयर इज सॉल्ट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इट विल स्टिमुलेट द थर्स्ट सेंटर इन द ब्रेन में ये थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा। जब ब्रेन में थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक की ज़रूरत पड़ेगी और ह्यूमन बीइंग ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इनटेक करेंगे, जिसकी वजह से उनमें इसका रिजल्ट ये होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो इन्हांस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट इसका ये है कि सॉल्ट विल कॉज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, और एंटी डायरेटिक हार्मोन एज इट इज़ शोज एंटी डायरेसिस, तो ये वाटर की एक्सक्रीशन को कम करेगा। डायरेसिस इज़ अ वर्ड यूज फॉर वाटर। एंटी डायरेसिस मीन्स एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इज़ प्रोहिबिटेड। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से जो वाटर की बॉडी से एलिमिनेशन है वो कम हो जाएगी और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इन द बॉडी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो इन्हांस हो जाएगा। एक तो सॉल्ट की वजह से वो ऑलरेडी इन्हांस हो चुका है, और सेकेंडली अब वाटर भी मूव करेगा तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो फर्दर इन्हांस हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के इन्हांस होने की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो इन्हांस हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम के इन्हांस होने की वजह से जो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर है, डेफिनेटली अब ब्लड में और फर्दर सब्सटेंसेस की एडिशन की वजह से जो सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर है, प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा और वो इन्हांस होगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को जो है वो सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी और वेनस रिटर्न ज़्यादा होने से कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जितनी वेनस रिटर्न ज़्यादा होगी, जितना हार्ट को ब्लड रिटर्न ज़्यादा होगा, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना रिटर्निंग ज़्यादा होगी। जितनी रिटर्निंग ज़्यादा होगी डेफिनेटली ब्लड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को पहुँचेगा, तो हार्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा पंप करेगा और जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। Whenever there is increase in cardiac output, definitely it will causes increase of the pressure, क्योंकि अब प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, अब ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो आर्टीरियल प्रेशर है वो इन्हांस हो जाएगा। तो इस तरह से जो सॉल्ट है उसकी लेस एक्सक्रीशन से जो कार्डियक आउटपुट है वो इन्हांस होती है इनडायरेक्ट वे में, और इस तरीके से जो आर्टीरियल प्रेशर है वो अल्टीमेटली इन्हांस हो जाता है। अगर आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया तो ये फिनोमेनाज इन्वर्स हो जाएंगे। उस केस में जो यूरिन का आउटपुट जो कम था वो ज़्यादा होगा, ताकि यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन की एक्सक्रीशन हो और वाटर को और सॉल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके, ताकि आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इन्हांस ना हो जाए। इस तरह से आर्टीरियल प्रेशर अल्टीमेटली नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीनल बॉडी फ्लूइड सिस्टम। So now we are going to discuss about pulmonary circulation. Pulmonary circulation is basically the circulation of blood from heart to lungs. Right side of the heart contain deoxygenated blood. This deoxygenated blood enter into lungs so that it will become oxygenated. After oxygenation, this oxygenated blood will return back to left atrium of heart. So the passageway of pulmonary circulation is that the blood will flow from right ventricle into the lungs and from lungs into the left atrium. Pulmonary circulation is done through pulmonary artery and pulmonary veins. Pulmonary artery is further divided into two subdivisions, left pulmonary artery and right pulmonary artery. Left pulmonary arteries take blood from heart and supply it to left lung so that it will become oxygenated. Left lung is further divided into two lobes. So left pulmonary artery gives two branches. Both of these branches will supply blood to two lobes of left lung. Right pulmonary artery is further divided into three branches because right lung has three lobes. That's why three branches will supply blood to three lobes so that the blood will become oxygenated. Now this oxygenated blood will taken up by the pulmonary veins. Pulmonary veins are two in number. These veins will return blood back to left atrium of heart.
From left atrium of heart, this blood will enter into left ventricle. When left ventricle undergoes systole, this blood will push to aorta and then it will supply to whole body, which will undergoes in systemic circulation. So pulmonary circulation is completed at this level when blood is returned to left atrium of heart. From left atrium, it's supplied to the left ventricle and from left ventricle into aorta, and then systemic circulation begin. So this is all about pulmonary circulation.